Welcome back to Game on Hay, where there are smiles all round still, because we are still talking about Pakistan and their latest triumph. Their 5 in 5 wins in the tournament so far. They obviously cruised into the semi-finals. Their batting was spectacular today, especially in those closing overs, and their bowling today very, very effective. So we're going to have a look at that. First of all, here are the bowling figures. Shaheen Shah Afridi, 1 for 24 from his 4. Imad opening the bowling again, none for 17. Harris Ralph again quick and clever, 1 for 27. Hassan Ali, as has been the case throughout the tournament, actually the most expensive, but he has his moments and he is ever enthusiastic, 1 for 33. And Shadab Khan, 2 for 14 from his 4. So overall did the job very well against that Scottish side that didn't have the firepower to really challenge, and they kept them down to 117 for 6. Now we've talked a lot about Pakistan's bowling for all the obvious reasons over the last couple of weeks, and it's been a very good unit and it's done the job. It's helped them win games. You need both sides, of course, batting, bowling and fielding. That's 3 sides to go well. We're going to focus today on the spinners, just pick out the spinners. So what do the guys make of Shadab and Imad? Yes, I think शादाब बहुत अच्छी टूर्नामेंट में बॉलिंग कर रहे हैं. आज भी 2 विकेट्स ली, सिर्फ 14 रन देके. ओवरऑल पेस भी बहुत अच्छी नज़र आ रही है और वेरिएशन भी. राशिद भाई नहीं, बॉलिंग अच्छी की है इस वर्ल्ड कप में. इससे पहले थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क इनकी परफॉर्मेंस पे आ गया था, विकेट नहीं ले रहे थे ये. अब इस वर्ल्ड कप में तमाम बॉलर्स अच्छी बॉल कर रहे हैं, लेकिन T20 में स्पेशल बॉलर थे ये, जिस तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट में आए और शुरू के 2 साल बहुत से गुजरे, लेकिन पैच हर बॉलर का आता है तो इनके ऊपर भी आया था. लेकिन अब ये इस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कैप्टन को भी बड़ी हेल्प मिलती है कि आपका एक मेन बॉलर अगर विकेट्स भी ले रहा है, परफॉर्म भी कर रहा है, रन भी कम दे रहा है. तो इमाद वसीम और शादाब मेरे ख्याल से राइटली चॉइस है प्लेइंग 11 में पाकिस्तान की, और बहुत बेहतरीन परफॉर्म भी. और एक जो चीज़ इनकी वापस अच्छी आई है, राशिद भाई जब ये बीच में इंजर्ड हुए थे, गूगली इनकी कम हो गई थी. आपसे भी बात हुई थी, हसन से मैं एक शो पे बात करी थी, हसन चीमा से भी, कि जब से इनकी वो इंजरी आई थी गूगली इनकी कम हो गई थी, जिसकी वजह से बॉलिंग उतनी इफेक्टिव नहीं रही. वो बहुत ज़बरदस्त बात है पाकिस्तान के लिए कि अब गूगली वापस भी आ गई है. कंडीशन है यहाँ पे, ये कंडीशन इनको सपोर्ट कर रही है. शारजा की पिच इनको सपोर्ट करेगी, मे भी लाहौर कराची शायद सपोर्ट ना करे, अगर सिडनी में खेलें सपोर्ट ना करे. तो ये कंडीशन वाले बॉलर हैं. कुछ पाकिस्तान के बॉलर जो खेल रहे हैं प्लेइंग 11 में, कुछ कंडीशन के बॉलर हैं. इससे पहले वाली सीरीज देखेंगे तो कुछ बॉलर्स ने परफॉर्म नहीं किया, जिस पे क्रिटिसाइज किया गया था. तो लेकिन अभी बिग इवेंट है, वर्ल्ड कप है, यहाँ पे अच्छी बॉल कर रहे हैं, बिल्कुल बात ठीक है. गूगली में बड़ी जान आई है, लेकिन अभी भी अगर देखें गूगली ब्रेक हुई है, लेग ब्रेक नहीं हुई है. और इफेक्टिव उस वक्त ज्यादा गूगली होती है जब आपकी लेग ब्रेक हो रही हो. टेस्ट मैच में जब भी नाकाम हो गए कि इनकी जो लेग ब्रेक थी वो ब्रेक नहीं होती, गूगली वो अब मैनेज कर लेते हैं. इस वजह से टेस्ट मैच में खिलाया गया. एज ए बैट्समैन ज़्यादा खेले, एज ए बॉलर कम खेले. बिल्कुल, ये तो होगी टेस्ट मैच की बात, बट ओवरऑल वर्ल्ड कप में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है. और साथ हम अब एक और बॉलर की तरफ नज़र डालेंगे जो बहुत खामोशी से अपना काम कर रहे हैं. जो भी पाकिस्तान की बॉलिंग का प्लेटफॉर्म सेट हो रहा है, इसमें इमाद का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है. 2 के विकेट्स नहीं ली, पर डॉट बॉल्स बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं. 4 ओवर में आज भी सिर्फ 17 रन दिए, और बहुत सी जो विकेट्स मिल जाती हैं दूसरे बॉलर्स को भी, उसमें इनका भी रोल बड़ा अहम. आई थिंक इमाद को अगर आप देखें कि जब भी पाकिस्तान टीम नंबर 1 साइड थी तो इमाद का बहुत अहम रोल था इसमें. और हमेशा जो नए बॉल के साथ ना वो टोन सेट करते हैं. ठीक है, शहीन के साथ जो उनको विकेट मिलती है, अगर ऊपर जैसे हमने पहले उस दिन मैच में देखा, लेफ्ट हैंडर का जजाई की विकेट उन्होंने क्रूशल टाइम पे विकेट ली थी. और थ्रू आउट जो है ना, अगर आज भी आप उनकी बॉलिंग देखें तो मेरे ख्याल गालबन 13 रन दिए हुए उन्होंने, आज भी 17 रन. तो मतलब वो सेट अभी जो है ना, क्वालिटी इसकी ये हो गई है कि पहले सिर्फ ये एक डायमेंशन का बॉलर था, सिर्फ बॉल अंदर आता था. लेकिन अब हमने इस टूर्नामेंट में भी देखा है और उससे पहले भी देखा है कि जिस वक्त सर्कल ख़त्म हो जाता है, पावर प्ले ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जो है ना वो बॉल को स्पिन करने की कोशिश कर रहे हैं. और मैं उनका इंटरव्यू भी देख रहा था, जो कि वो ट्राई कर रहे हैं कि वो फिंगर कैरम बॉल भी करने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये अच्छी चीज़ है, पाकिस्तान के लिए खुशाइन बात है कि ये जो है ना दोनों हमारे स्पिनर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं. आई थिंक कि जो क्रेडिट जाता है शादाब को, जो पहले मैच में इंडिया के खिलाफ उन्होंने बॉलिंग किया, उसमें एक बुरा बॉल किया था उन्होंने पूरे मैच में. और जब आप इंडिया जैसी टीम के स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइन आपके बैटिंग के खिलाफ अगर आप अच्छी बॉलिंग करते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस, क्रिकेट गेम है सारा कॉन्फिडेंस का, तो उनको उसमें कॉन्फिडेंस बहुत मिला. एक चीज़ जो मुझे कंसर्न है वो ये है कि हमारे एक्स्ट्रास
जिस पे क्योंकि आज अगर आप देखें कि 7 हमने वाइट बॉल किए हैं एंड 3 नो बॉल्स। ओके, वी आर वेरी लकी, शाहीन ने उसमें वी आर वेरी लकी कि हमें बहुत है। 3 नो बॉल्स का मतलब है कि 18 एक्स्ट्रा रन, सो यू कैन गो एनीवेयर। हम लकी थे कि हमारे मैचेस इन टीम के खिलाफ थे और हमने वो डॉट बॉल हो गए, लेकिन इसमें हम अच्छी टीम के, क्वालिटी टीम के खिलाफ जो है ना, ये वाला नहीं कर सकते। और आपको पता है T20 फॉर्मेट में 2 से 4 रन से आपकी गेम फ़र्क हो जा सकती है। तो ये कंसर्न है कि हमारा जो एक्स्ट्रा वाला है, इस पे मेरा कंसर्न है। बहुत अच्छे एनालिसिस हैं और ये जीतने के टाइम पे ही एनालिसिस करने पड़ेंगे ताकि हम इंशाल्लाह वर्ल्ड कप में और मज़ीद आगे जा सके। उमर, अब नॉकआउट स्टेजेस आ चुकी हैं और दोनों स्पिनर्स का रोल, जिन दोनों स्पिनर्स पे हमने बात की है, कितना अहम होगा। अभी तक सपोर्टिंग रोल इनका ज़्यादा रह रहा है, पर जिस तरह की पिचेस भी अब नज़र आ रही हैं, लगता है कि इनका रोल शायद अगले 2 मैचेस में और भी इम्पोर्टेंट हो जाए। नहीं, बिल्कुल। अगर आप देखें, दोनों को अपने रोल का पता है। इमाद वसीम जिस तरह के बॉल कर रहा है, उसका फेस बॉल में मोस्टली वो बॉल करता है नया बॉल पे, जो कि बड़ा मुश्किल टाइम है उस टाइम पे बॉल करना, और स्पेशली स्पिनर के लिए। तो वो अपना रोल बखूबी अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि जब आप डॉट बॉल करते हो तो उससे भी अपोजिशन पे, दूसरी टीम पे ना प्रेशर बिल्डअप होता है। तो मेरे ख्याल से जो उसके जो हमें बॉलिंग अच्छी हो रही वो इसलिए कि एक एंड से जो ना, वो एक पार्टनरशिप में आप बॉल करते हो, वो प्रेशर बिल्ड करता है, डॉट बॉल ज़्यादा कर देखे। आज भी अगर उसने 4 ओवर में 17 रन दिए तो इट्स मीन्स कि उसने पोजीशन को डिस्टर्ब किया है, उस पर प्रेशर डाला है। और जो शदाब को, जो हम वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले हम जो कंसर्न था हमारा, कि हमारा जो मिडिल ऑर्डर में शदाब तो बॉल कर रहे लेकिन वो विकेट नहीं मिल रहे उसको, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन है यूएई की, यहाँ पे आपके स्पिनर का रोल बहुत अहम है, स्पेशली मिडल में। तो आई थिंक दोनों बखूबी अपना रोल निभा रहे, इमाद वसीम ऊपर से और शदाब। जो एक चीज़ हम मिस कर रहे थे कि विकेट टेकिंग बॉलिंग, वो उससे नहीं हो रही थी, जो कि अब उसने करनी शुरू की। मेरे ख्याल से बड़ा ज़बरदस्त है पाकिस्तान के लिए, और आगे जो हमारा जो क्रूशल मैच है उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त टाइम पे उनको फॉर्म में आना ज़रूरी है। बिल्कुल। Both these spinners are bowling in partnership and sticking to their roles. Imad's role is just to keep building pressure and bowl those dot balls. He's doing that really well. And Shadab is getting us wickets in the middle overs, and that has been his role. We have only one concern in our bowling lineup, that is Hassan Ali. Indication is the other day he bowled a new ball. Today he bowled a no ball and a white ball. Because when you're playing in a pressure game, one ball, no ball, and followed by a 6 can change the gear of the game. And when you're bowling in no balls, it means you're nervous. You're not confident. You're not at your best of confidence. So he has to be very careful before the big game. Clear your mind. There shouldn't be any doubt, because when there is a doubt, might ball or no ball, so your all thoughts and concentration goes on the feet rather than where I'm going to bowl and how I'm going to manage the batsman. The problem is Shaheen bowling no balls as well, because Shaheen bowled 2 today and Hassan bowled 1 today. But Hassan, like when you said I got concern on Hassan, I think there's concern definitely, because if you see, Hassan bowled 2 maiden over. Like today, he bowled 1 maiden over, but he's bowling a bad deliveries a lot. He's not consistent. If you see the dot balls, I think he bowled 12 or 13 dot balls today, and he went for 33. So, he's giving the boundary balls. Normally, he is very consistent with his line and length. I think someone needs to talk to him. Yeah, because once you bowl like China, I haven't seen him bowling no balls. Today he bowled. But if you're repeatedly bowling a no ball, then it signs that you have a problem. And that's a nervousness. That has to be, मेरे ख्याल से शाहीन को विकेट्स नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से शायद जोर ज़्यादा लगा। He's running too hard. जी उमर, आई थिंक सेम चीज़ जो आप प्रेशर की बात करें, बिल्कुल हसन पे प्रेशर होगा, क्योंकि हमेशा जो ना किसी भी प्लेयर पे एक जैसा टाइम नहीं होता। वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जिस तरह मैंने 2017 की जो चैम्पियन ट्रॉफी में जिस तरह मैंने बॉलिंग की, मैंने अपनी सीरीज़ बना, बेस्ट बॉलर उसमें बना, तो सम टाइम आपको रियलाइज़ करना होगा कि ठीक है अब वो अंडर प्रेशर, क्योंकि उसको उस तरह की विकेटें नहीं मिल रही जिसकी वजह से वो मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा जोर लगाने की कोशिश कर रहा है। की जरूरत है किसी उसको रियलाइज करना चाहिए कि कंपटीशन इज विद इन योरसेल्फ,
तेरे साथ है ना कि शहीन और हारिस के साथ है। I'll give him a call today. उसको बोलो कि हेलो अपना रोल जो है ना सिर्फ वो कर, ये टाइम आता है कई दफा विकेटें नहीं मिलती तो नहीं मिलती और मिलती हैं तो हैट्रिक भी मिल जाती है। आस्क रबाडा you go don't go after them. It will follow you if you stay disciplined. Quick question for Viv. These two spinners, one of whom is almost a swing bowler at the start of the innings, up against Australia in the semi-final. Aussies see leg spin. Now, they've got their own. They've got Zampa, of course, so they know about leg spin as well. How do you think they'll get on against Aussie? That doesn't necessarily say they played that well, because we've seen them suffer under that way. You have good leg spinners who would have done them as well, even though they would have had Zampa, who I guess would have been have some effect in the nets of such. But when you look maybe at the individual like Wasim, I think he's just special because you have 2-in-1 in my opinion. You know, he can give you a little pace stuff, and he's so clever because he watches the batsman's movements and he gets the ball in areas where you cannot get onto him. And I think that's very good for him. For Iman, I think him getting 2 wickets, coming back into some sort of form, is quite crucial for Pakistan causes as well, because there were thoughts about him not really hitting his mark and hitting his spot. But the same way he's at now, you know, I guess he should go into the semi-finals with some confidence, and hopefully that Hassan Ali can find some sort of Advice. advice as well. You said you will give him a call later on this morning. Just But, he has to be calm and composed. Oh, well, okay, it's interesting because Hassan Ali is a character, isn't Yeah, he? yeah. When you see him on screen, the hair and the expressions and the energy, you kind of don't want him to lose that. But at the same time, you want him to keep control of what he's doing. So, I mean, you want that passion, you want the energy. No, passion should but be you need there, the control. but Yeah. Who's better? there must be to give him- something differently he's doing. He's Try and relate that to you. Maybe Having you here. going for pace, more pace, or maybe going for wickets. This was his Aaqib, issue if with you the see- domestic also. Is it? In Quaid-e-Azam Trophy last year, there were a lot of No balls. no balls, but in the PSL, he didn't bowl a lot of no balls. He's running from the wider. I just saw his videos, you know, like the video I worked with him and watched his video today as well, watching closely. He's running from the wide, and he's ये decode किया ना? yeah, decode. This is the decode, you know. He's running like this from the wide and then going there. He's not. His momentum is not towards the target. Sometimes He changed. you believe He sometimes. changed. He's running wider and jumping in rather than, you know, before he was running straight in a straight Widely line. changed. Okay. I don't know. Sometimes, you know, it's Okay, happened. yeah. You know, sometimes Okay. it happens. ये करवा देना Let's, इसका, let's save तो साथ में- something for, when we preview that semi-final for 5 hours before the game. Don't give them ideas. Okay, 5 minutes. Right, let's turn our attention now to the other game played today between New Zealand and Afghanistan. Afghanistan winning the toss, and they decided to bat first. This was what happened. Sadly, it wasn't quite as productive as they'd hoped for in Abu Dhabi. The openers came and went very quickly. There's some very good, well thought through bowling in the opening overs in that power play. So top 3 gone quickly. Gulbadin 15. The only man to play an innings of any substance was Najibullah Zadran with that 73 from 48. So 124 for 8, very much below par, I'd suggest, in Abu Dhabi. Yes, and especially when they were batting first, I don't think so that they were expecting that the openers and the top order will go out that cheaply. I think credit to New Zealand and their think tank. They executed it really well, and that's what we thought, that New Zealand is a better side, and that's what they showed on the ground. Indeed. So that one innings of substance was played by Najib, 73. Let's have a look at the way he played that lone hand, the shots he played, the resistance he showed, the power, the placement, whatever it might be. This is, That's again, a great shot. that's a lovely shot, you're right. I mean, this is the challenge, isn't it, for the nations that want to compete at the top. They have to get more people like this playing together. I mean, these are great shots. There's some very fine shots. But if you look at any team that's going to prosper in a World T20, you need a guy doing this sort of thing. I mean, 70 is a good score around which to base an innings.
but you need support. You need 2 or 3 others getting their 20s and 30s in good time. Then you build big totals. But for him today, a proud day. So we take our hat off to him as he acknowledges the support there. I mean, that's almost a sort of Rashid Pant type shot, isn't it? Almost. Up it goes. Still more to come. If you compare him to Zazai, he's technical more solid than Zazai. That's why, like when somebody is bowling quicker and, you can survive that and then you can play shots after that. Yeah, when the Zazai-Shahzad opening partnership, you want it to work, because if it does work, it's mighty entertaining. And the ball will disappear a long, long way. But you see Zazai so often, he wants to go one way primarily, which is sort of over there somewhere. And when it connects, it does go 100 metres. But it's always vulnerable. Yeah, international bowlers, they got a plans and, everything, put the ball outside our stump, and then he can't hit there. He can only hit in his arc, in that slot. If it's there, he can hit it. If he wants to improve, his game, then he has to have shots through cover as well. So, might need to work on that. Yeah. So, because otherwise, international cricket, playing against quality side, playing against Mitchell Stark and all these guys, Hazelwood, they're not going to give you ball over here. Okay, with the minnow side, yes, you can get balls here and there, and he can demolish them. Yeah. सर भाई अगर आप नजीब की बात कर लेना, I don't think so कि वो technically इतना अच्छा है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है कि वो उसकी शॉट सिलेक्शन वो सही है. वो वेट कर रहा है बैट बॉल के लिए कि वो जो बैट बॉल उसको मिलता है उसको पनिश करता है. अगर आप फिर शहजाद और उसकी बात कर रहे हैं तो वो उनको शॉट सिलेक्शन का कोई आइडिया नहीं, वो बस जिधर उसके रडार में आ जाए वो घुमाते हैं. क्वालिटी मेरे ख्याल से नजीब की कि शॉट सिलेक्शन इसकी अच्छी है. लेकिन वो शॉट सिलेक्शन इस वजह से अच्छी है ना कि वो उधर भी खेल लेता है, तो तभी है ना. अगर आपको एक ही तरफ होगी तो फिर मुश्किल हो जाता ना. तो शॉट सिलेक्शन उसी वक्त होगी जब आप इधर भी खेल लेते हो इधर भी खेल लेते हो. ये लोग सिर्फ बॉल ही ये देख रहे होते हैं, इस वजह से प्रॉब्लम है. I think you're right. You have to develop the other side of your game. Otherwise, bowlers will target one area knowing they can keep you quiet. If you come up with shots that reflect the fact that you've thought about it, then it cuts down the options for the bowlers, gives you options to score runs. Anyway, we will leave that there for a moment or two. I think so. Vivian. Are we going for a break? I thought you were going for a break. I was. I thought, well, do you want to leave now? I said, what about that last over from Nisham to Rashid Khan? I think there was a lot of runs missed there. And we have heard that Rashid Khan can smack it to all parts when he gets going. That, to me, was an opportunity missed, especially with the field setting also. 4 or 5 dot balls. Yep. Yeah. That's all I wanted to get in. Okay. Yeah. That's a very good point. इसी के साथ हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक की जानिब, उसके बाद हम वापस आएंगे और इस मैच को और डिटेल में देखेंगे. गेम ऑन है. by Hassan Ali. उजली दुलाइया वे पावर शाइन ना लाइया वे जब कपड़े लगे बिल्कुल न्यू तो फिर दूसरा पाउडर क्यों? उजली दुलाइया वे पावर शाइन ना लाइया वे कमांडर पावर शाइन. पावर शाइन पावर शाइन हर शाम हर घूंट वाइटल के नाम वाइटल पियो जिंदगी जियो. नया लाइफ बॉय केयर एंड प्रोटेक्ट जो दे जरासीम से 100% यकीनी हिफाजत प्लस मॉइस्चराइजर्स दे स्किन केयर. बड़े ख्वाब बड़ी हिफाजत. नया लाइफ बॉय. सिर्फ जोंग 4G पर है गूगल मैप्स बिल्कुल फ्री. अब ट्रैफिक को क्लीन बोल्ड करें और घर जल्दी पहुंचकर मैच देखें. लेट्स गेट डिजिटल विद जोंग 4G. खुद भी खा सबको खिलाओ. कैंडीलैंड की चॉकलेट नाउ. कैंडीलैंड की चॉकलेट नाउ. New Set and Touch Shampoo Plus Conditioners. The extraordinary touch. Set
Get in touch. मरहबा हनी, सेहत से जुड़ा कुदरती मजा. Start some happiness with Deep Green Smile. MH1515. Bluetooth, repeat, delay and echo effects. 8 hours battery backup. HD